ओके, सो आज का टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने मॉडल बिना रिटोपो करें या फिर अनरैप करें डायरेक्ट ZBrush से सब्सटेंस से कैसे लेके जा सकते हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। हमें बेसिकली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, समथिंग विच इज सस्टेनेबली कंपैटिबल फॉर सब्सटेंस प्रिंटर, जिसको हम ओपन कर सके सब्सटेंस प्रिंटर में। दूसरा, सब्सटेंस प्रिंटर में टेक्सचरिंग के लिए हमारे को नीड होती है अनरैप की। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ZBrush में क्विकली कैसे करके अपने मॉडल को रेडी कर सकते हैं फॉर टेक्सचरिंग इन सब्सटेंस प्रिंटर। सो लेट्स गो फॉर दैट। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा कैरेक्टर है जो मैंने लास्ट नाइट एज अ सैटरडे स्क्रप्ट रेडी किया था, सैटरडे स्केच। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई एम गोइंग टू टेक दिस पार्ट ऑफ दिस मेश कि मैं इसके फेस को कंसिडर करूंगा। इसको हम लोग रेडी करते हैं छोटे से पार्ट को कि यहाँ से ZBrush से मैं डायरेक्टली सब्सटेंस प्रिंटर तक लेके जा सकूँ। ओके, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग ZBrush 2026.2, द लेटेस्ट वन। You can also try it out. Like, some of the new features are there, that you can explore on your sites. Okay, तो अभी इसको आगे करते हैं। जैसे फर्स्ट सिंपली मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया टू टर्न दिस वायर फ्रेम थिंग ऑन। आप यहाँ पे लाइन को ऑन कर सकते हो वायर फ्रेम थिंग। राइट नाउ इट्स ऑन 1 मिलियन पॉलीगन्स। 1 मिलियन पॉलीगन्स के बाद हमें अगर इसको डायरेक्टली सब्सटेंस में ओपन करना है, ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो आप ट्राई कर सकते हो। सिंपली आई एम गोइंग टू ड्रैग दिस थिंग, लाइक डुप्लीकेट दिस थिंग। डुप्लीकेट हो गया और इसका पॉलीगन बंद करते हैं एंड मेक इट सोलो, राइट। एंड देयर इज वन ब्रश कॉल्ड ZBrush गाइड। तो बेसिकली ZBrush गाइड हेल्प्स यू टू reduce the mesh of this particular polygon with a control flow. जैसे मैंने यहाँ पर आकर कुछ फ्लोस में ड्रॉ कर देता हूँ which I need in symmetry, something like this for eye roundness, okay, one for lip, okay, and same thing for nose. That's it. Okay, I give this thing, then I connect the nose with the mouth like this. Let's make brush small, तो आपस में intersect नहीं करेगा, so that will be better for us अगर वो intersect ना करे तो। Like this. Okay, so this is not a compulsory step. You can avoid this one, but मैं इसलिए कर रहा हूँ कि what I feel that जो हम भी mesh retopo करते हैं या उसको reduce करने का try करते हैं, तो it should be in our control. तो वो बस control को grab करने के लिए आपको एक trick बता रहा हूँ that you can quickly do this thing, जिससे आपको ये सब cuts जो है control में मिल जाएंगे। Okay, now simply go for ZBrush। हम लोग यहाँ पे ZBrush पे जाएंगे, just go for ZBrush and just simply ZBrush। Okay, so it will take some time according to the system configuration of course। तो यहाँ पर मेरा Retopo हो गया and same thing, जिस direction में मैंने guides को draw किया था वो direction में guides मेरे को मिल गया। Okay, I want little more, like let's go for half and let's try this out। 8000 polygon from 1 million thing, it's quite enough। Okay, so यहाँ पे एक चीज और हो रही है कि हमारा थोड़ा डिटेल लूज हो गया है। You can easily grab that back, बहुत easy steps है उसके लिए। आप दोनों मॉडल्स को ऑन करो, सोलो को ऑफ करो and just hide everything what is not required for now। Okay, something like this। Okay, I go for Control D, divide it multiple times like this, and then there is an option called project and simply project all। Okay, here you go, then you project all। So basically it grab all the details onto from the high poly thing। So हमारा वो grab हो गया। So if I make it solo, so you're almost there, right? If you feel the details are still missing or something is not coming, give one subdivision, although it's coming already, it's on 2 million, so it's already looking good। Okay, in this case we have both the polygons, like high poly and low poly। And what is the benefit of this thing? जब आप इसको वापस लो पॉली पे लेके जाओगे तो you already have those details जो आपका पहले लूज हो गया था, like this lip fill out और nose fill out और ear fill out, जो भी मिसिंग हो गई थी वो सारी चीजें वापस आ गई। Now moving forward, we're going to give some polygroups, which is like base for today's tip। तो basically मैंने क्या किया यहाँ पर, I'm simply going to divide this thing। जैसे कि let's take a lasso। Lasso से I will draw a thing here, both sides, Control W। So here you go, it's covered। Okay, okay, let's hide this one। I'm going to take this one, Control W। So this is like on the back side,
और यू कैन इंक्रीज अ बिट, थोड़ा सा इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास कुछ पॉलीग्रुप्स बन गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लाइक दिस। इफ यू वांट कि आईज भी अलग हो जाए तो आपको बहुत सिंपली यहाँ पर जितना भी मतलब पेंट करो तो बेसिकली देयर इज नो हार्म इन दैट थिंग। अगर आप आईज को भी अलग करना चाहते हो सो जस्ट पेस्ट दिस थिंग, इसको भी हम मास्क कर लेते हैं एंड असाइन अ न्यू पॉलीग्रुप, राइट, समथिंग लाइक दिस। Awesome, done. Then we go for Z plugin. Let's dock this one here. यहाँ पे इसको डॉक कर लेते हैं Z plugin यहाँ पे, and then there is an option called UV master, polygroup and unwrap. So simply go for unwrap, copy UVs from here. Then हम अपने normal tool बार में आएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है UV map और UV map में morph UV, like this. So if you notice जैसे जैसे अपने पॉलीग्रुप्स बनाए थे उसी सेक्शन में आपका सिंपली डिवीजन आ गया। ओके, वी हैव अ नाइस कंट्रोल यूवी एज पर द पॉलीग्रुप्स। ठीक है, डन। वापस से मॉफ कर देते हैं इसको, डन। ओके, नाउ इफ आई जस्ट सिंपली गो फॉर थिंग लाइक एक्सपोर्ट, लेट्स गो फॉर डेस्कटॉप एंड देयर इज अ बेक टेस्ट। ये हमारा हो गया फेस एलपी विजुअल एंड फ्रॉम द सेम मैश ओनली आई जस्ट प्रेस डी, तो ये हमारा यहीं से हाई पॉली भी आ गया। ओके, तो मैंने इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है, सेम फोल्डर फेस एंड एलपी, सॉरी एचपी। ओके, तो ये आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे को सिंपली पता है कि हमें पेंटर में जाना है, व्हाट वी नीड टू डू many of you guys already know, but एक बार मैं just for test sake कर लेते उसको complete। 3D printer। So basically ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल है जो लोग फुल फ्लैश पूरी पाइपलाइन से नहीं जाना चाहते कि मैं Retopo करूँ, like make it, of course हर कोई एनिमेशन के रेडी नहीं कर रहा अपना मॉडल को, तो जो लोग को टारगेट नहीं है कि एनिमेशन रेडी हो, बस अपने कैरेक्टर स्किल को शोकेस करना है, like how the sculpture make and then उसको टेक्सचर करके अट्रैक्टिव वे में रेंडर्स करने हैं। So this is our trick, you can create any kind of mesh like this। आप लोग easily ZBrush की हेल्प से ही सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। And secondly, if you need the neat and clean polygroup lines, so there is one option that's an add-on for the today's tutorial। so इसको एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आया और I go for downwards, right, this one। तो हम लोग का एक disturbing line दिख रहा है, that is like because of low poly। so there is one brush in your light box that called smooth groups। okay, तो हम लोग smooth groups में जाएंगे, like go for brushes and smooth groups here, smooth groups। okay, and simply okay just press your shift key and now your polygroup line is going to be smooth, and accordingly it will affect the UV shells also if you want it। so for now it's not required actually, so I just go for